Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here to record the makeup routine, the base routine actually, sorry for the background noise, contour, highlight, full face routine. So yeah, these are very affordable products and I will talk about the products in the, while I'm doing it. So yeah, these are my favorite products, and if you guys like it, subscribe to my channel, share my videos, and for anything अगर आपको कुछ request करना है कोई videos तो आप नीचे comment section में लिख सकते हैं and I will look into your request for sure. And you can even DM me on my Instagram. I will put my details in the description box down below. And without any further wasting of time, without wasting any further time, let's just jump right into the video. I always end up doing this to myself. I'm sorry. Okay, anyways, let's get started. Okay guys, so let's get started. First of all, I'm gonna be moisturizing my face. Obviously that is the key to a perfect base. You need to moisturize your face, so I'm just using the NIVEA skin cream for the face and applying it all over the face and working it into the skin so that everything is nicely blended and the skin remains extremely moisturized. And after that I'm going to be using the MASSARRAT MISBAH Silk Foundation. This is my favorite foundation these days, and I just mix in a little bit of facial oil into it. If you're an oily skin girl, you can use it directly. If you have dry skin, you can mix in any क्या कहते हैं इसमें आप कोई सा भी facial oil mix कर सकते हैं. And I'm just putting that all over my face and the neck. Obviously you don't have to forget the neck, and I'm gonna be blending it out using the favorite brush, my recent favorite brush. This is from the BH Cosmetics sculpt blend and sculpt brush set part 3. वो number 3 वाला जो है ये वो है, उसमें से है ये. And I love this brush. It blends out my foundation flawlessly. ऑब्वियसली मैं इसके बाद जो है ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड आउट ज़रूर करूँगी, लेकिन ये ब्रश सेट बहुत अच्छा है. आप इसको जिस साइड से ले सकते हैं मैं उसको लिंक डाउन कर दूँगी नीचे. एंड जो रेस्ट फाउंडेशन मेरे हाथ पे रह गई है उसको मैं पूरे फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर रही हूँ. एंड यू हैव टू टैप एंड देन ब्लेंड इन सर्कुलर मोशंस ताकि बेस अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए. नाउ मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ और आप देख सकते हैं कि ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर जितना भी एक्सेसिव प्रोडक्ट आ रहा है वो वाला प्रोडक्ट है जो आपके फेस पे रिक्वायर्ड नहीं है. तो ये सारा एक्सेसिव प्रोडक्ट उठा लेता है. सो आई एम जस्ट डैबिंग इट ऑल ओवर द फेस. अब अंडर आइज़ की बारी है. I dropped the concealer obviously. So yeah, I'm using the Maybelline Age Rewind concealer. I love this. This is in the shade Honey. और मैं अपने अंडर आइज़ पे एक उल्टा ट्रायंगल बना रही हूँ, एज़ यू कैन सी, क्योंकि ये बेस्ट वे है टू कंसील योर डार्क सर्कल्स. और मैं बाकी एरियाज़ पे भी लगा रही हूँ जस्ट टू हाईलाइट द फेस. So I am now blending it out using my beauty blender. Just tapping motions. No, आपको बिल्कुल भी इसको फेस पे रब नहीं करना, सिर्फ इसको पैट करना है फेस पे. तो मैं सारे एरियाज़ को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ सो दैट देयर इज़ नो हार्श लाइंस. देयर आर नो हार्श लाइंस. या सो अब ब्यूटी ब्लेंडर का नीचे वाला हिस्सा लेके मैं उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे फाउंडेशन था एंड इट विल मेक इट लुक मोर फ्लॉलेस. Now I'm going to be setting my face with the COTY AIRSPUN. This is my favorite loose powder. You get so much product and this is so affordable. So अब मैं एक नॉर्मल सा ब्रश लेके और अंडर द आइज़ और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ पे थोड़ा हेविली सेट करूँगी उसको, और बाकी एरियाज़ पे लाइटली डस्ट करूँगी पाउडर को, सो दैट फेस सेट भी हो जाए लेकिन ज़्यादा केकी भी ना लगे. सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग. एज़ यू कैन सी, जहाँ पे कंसीलर लगाया था वहाँ हेविली सेट किया और बाकी एरियाज़ पे मैंने उसको लाइटली सेट किया. सो या, doing that. Now it's time for contour. Contouring के लिए my favorite palette is the Makeup Revolution Powder Contour Palette, and I just love it. I'm going to be using these two shades right here to contour my face. So I'm just using this brush. ये भी BH Cosmetics के brush set में से आया था, and this is a large fluffy brush. इससे मैं अच्छी तरह से face को contour करूँगी और bronze भी करूँगी. So I am just doing that on the hollows of the cheekbones. आपको कैसे पता चलेगा कि ये perfect shade है, आप मतलब perfect blend हो गया है. आपको इतना ज़्यादा इसको blend नहीं करना है कि बिल्कुल गायब हो जाए फेस पे से. थोड़ा सा पिगमेंट छोड़ देना है जैसे कि मैं कर रही हूँ.
कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसको ब्लेंड कर देते हैं तो बिल्कुल प्रोडक्ट गायब हो जाती है, सो वो नहीं करना है आपको। और अगर फिर भी आपकी प्रोडक्ट गायब हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट में मसला है, वो आपको सूट नहीं कर रही है या आपको ब्लेंड करना नहीं आ रहा है। अब मैं एक छोटा ब्रश ले रही हूँ और मैं उसको इंटेंस कर रही हूँ डार्कर शेड लेके। एंड आप देख सकते हैं मैं आपको इशारा करके ये बता रही हूँ कि एक हिस्सा फेस का हाफ हिस्सा जो है लिफ्ट हो गया और दूसरा हिस्सा वैसा ही लग रहा था। सो आप देखें दोनों हिस्से फेस के दोनों साइड्स जो है वो लिफ्ट अप हो गई हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट ब्लेंडिंग एवरीथिंग इन प्लेस प्रीटी नाइसली। डबल चिन को भी कंटूर कर लिया है मैंने। And now it's time for the nose contour, so I'm just taking those two shades on a fluffy eyeshadow brush और मैं nose को contour कर रही हूँ very lightly and I'm taking it eyebrows के पास तक मैं लेके जा रही हूँ ताकि वो अच्छी तरह से blended लगे। एंड नाउ जस्ट टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर और इसके साफ वाला जो पार्ट था उससे मैं अच्छी तरह से सब चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लश। दिस इज़ माई फेवरेट ब्लश, दिस इज़ पेर्लेसेंट पिंक बाय वेट एंड वाइल्ड एंड आई लव दिस ब्लश। दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन टोन। अब मैं एप्पल्स ऑफ द चीक पे, जो मेरे एप्पल्स हैं चीक के, उनके ऊपर मैं ब्लश लगा रही हूँ, अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करूँगी। उसके बाद वही वाला बड़ा फ्लफ़ी ब्रश लेके अच्छी तरह से मैं उसको ब्लेंड आउट करूँ। नाउ इट्स टाइम for the favorite thing. Oh my god, I love this part. This is my favorite highlighter. This is the Wet n Wild Precious Petals highlighter. I love this stuff. Highlighter is the most favorite part of makeup मेरे लिए. You all know that and you can see how much I'm enjoying it. This brush is also from the BH Cosmetics set and I love it for highlighting my face. So I'm just highlighting the highest points of my cheeks and इसके बाद मैं nose highlight करूँगी, bridge of the nose and tip of the nose as well. Yeah, and Cupid's bow, chin को भी highlight करूँगी और हल्का सा forehead पे भी highlight करूँगी। And if you guys know me तो फिर आपको पता होगा ये highlighter मेरे लिए enough नहीं है, so I'm just going in with the Makeup Revolution Vivid highlighter in golden lights और मैं ये थोड़ा सा लेके इसी के ऊपर इसको लगाऊंगी just to make it more blinding because obviously that's how I like it. And this is it for the video you guys. मैं इसको setting spray से spray कर लूँगी face पे अच्छी तरह से and to set everything in place. This was the NYX dewy setting spray और beauty blender से हल्के हल्का मैं सबको dab करूँगी। How the base turned out. This is how I do it, and this is my face after doing all that makeup and stuff. So you can see how flawless it's looking. So these are the techniques. अगर आप follow करना चाहते हैं, मेरी eyelash निकल गई है, sorry for that. Okay, so this is what it is, and I love you guys so much. All my Duo Monsters, the Duo Monster fam, I love you guys. Okay, so next video jaldi aayegi inshallah. I know I waste a lot of time. I don't put on a lot of videos that other YouTubers do, but it's fine. I have a lot of clients, I have a lot of other stuff to do. I'm extremely sorry अगर YouTube neglect हो जाता है तो I'm so sorry for that. But yes, I have decided कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा record करूँगी this year and I will entertain you guys. And anyways, so this was it for this video. I hope you guys will love this. And why am I talking so much? I have no idea. Okay, so let's just pray that this year goes on in a positive way. कुछ बुरा नहीं हो and हम लोग positivity के साथ ये year start करें. And I will try to be very positive. I will try to be a good girl in terms of being positive and live and let live. Be positive, don't be negative. I don't want any negativity on this channel. कोई भी अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो आप प्लीज़ वीडियो ना देखा करें. आप unsubscribe कर सकते हैं मुझे if you don't like me. If you like me, you're most welcome. And take care of yourself, you guys, and bye.